वन अगर आप लोग विदाउट फाउंडेशन एक ब्यूटीफुल मेकअप लुक चाहते हैं तो दिस इज द राइट प्लेस वेयर यू हैव कम एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड दिस विल बी completely for school girls, college and whoever go out for parties and जो लोग हाउसवाइफ्स हैं वो लोग भी बाहर नॉर्मल मिनिमल मेकअप में जा सकते हैं. सो या लेट्स वेलकम बैक टू माय चैनल. नमस्ते, सत श्री अकाल. तो आज जो है वीडियो बनाने जा रही हूँ वो कम्प्लीटली नो मेकअप लुक. तो ये बेसिकली होगा विदाउट फाउंडेशन, क्योंकि बहुत कोई है कि फाउंडेशन लगाना नहीं चाहते हैं वो लोग फेस में, तो नो कंसीलर, नो फाउंडेशन. सो विदाउट दिस वी विल मेक अ क्विक easy makeup tutorial. So at first we will clear our face with face wipes, और अगर आप चाहते हैं तो आप फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये रहा मेरा फेस वाइप. सो आई स्टार्ट विद टाइम. ये ध्यान रखना पड़ेगा कि whenever you start with your makeup you have to always clean your face. So whether it will be with wipes or without wipes. So I'm done with my face clear, and now the first step which you have to apply is moisturizer. तो मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, दैट इज़ लैक्मी पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र 24 आवर्स लॉन्ग. तो आप लोग जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप लोग वही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. आई जस्ट जेंटली दिस विद हैंड्स ओनली. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. एंड नाउ सेकंड स्टेप वुड बी यस. तो आप लोग सबको पता ही है कि ये सनस्क्रीन है एंड दिस इज फॉर लोटस. आई थिंक एवरीबडी जनरली यूज दिस लोटस फॉर सन प्रोटेक्शन, स्किन लाइटनिंग एंड मैटिफाइंग. तो अगर आप लोग एक मैट लुक भी चाहते हैं तो वो भी ये दे सकते हैं. मॉइस्चराइजर देन बहुत कोई अप्लाई करते हैं प्राइमर. सो हम लोग जो अभी यूज़ करने वाले वो होगा दिस वन, बिकॉज दिस वन इज एक्चुअली ऑल इन वन. टेक जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस सनस्क्रीन एंड मैं ये जनरली हाथ से ही लगाऊंगी. तो आप लोग देख पा रही है टेक्सचर, ये एकदम फाउंडेशन की तरह ही है. तो आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. फर्स्ट में डू अप्लाई इट अंडरनीथ योर आईज, बिकॉज यहाँ पर जनरली जो डार्क सर्कल्स एंड ऑल होते हैं, तो इसीलिए वी विल अप्लाई दिस. आप लोग को अगर ज़्यादा स्कार्स है इस साइड में, नोज के साइड में या माउथ के साइड में, सो यू कैन अप्लाई इट हियर एज वेल. ये अब्सॉर्ब कर चुके हैं फेस में. एंड नाउ द थर्ड थिंग विच आई विल यूज is your face powder. So yeah, I have this Huda Beauty face powder and I'll apply that. ये हाथ में ही लगा लूँगी ऐसे करके. Then I'll start wiping it with the sponge. एज यूजुअल मैंने आप लोग को बताया है कि अगर आप लोग को यहाँ माउथ के साइड में अगर स्कार्स है, नोज के साइड में अगर आप लोग को वो ब्लैकिश टाइप है, तो आप लोग ये डेफिनेटली फेस पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही पुट कर सकते हैं ताकि वो ढक जाए. Show you that how does this look actually after applying this only 2 ingredients in my face. So I'll just keep the camera close
So आप देख पा रहे इतना क्लियर, मैट एंड ग्लोई स्किन मेकअप दे रहा है ये look. Okay. So finally we are done with the makeup thing, and now first thing is, after doing the face makeup you have to go ahead with your eyebrows. So eyebrow is actually must, you should do. ब्राउन शेड यूज करती हूँ बिकॉज इट गोज विद माई आईब्रोज. तो आप लोग जो यूज करते आए हैं आप वही यूज कर सकते हैं, और जो लोग नहीं करते थे इसके आगे तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई विथ ब्लैक शेड और यू कैन ट्राई विथ दिस ब्राउन शेड एज वेल. इज अ ब्रश, एंड इस ब्रश से फर्स्ट आई जस्ट ब्राउ माई आईब्रोज. दैट्स इट. आप देख पा रहे हैं कि प्रीवियस में जो मेरा आईब्रोज था और अभी इट्स सो पॉलिश्ड एंड सो स्मूथ. सो अगेन विद दिस ब्रश आई जस्ट ब्रश इट अप ताकि ये पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे. मेरा आईब्रोज में हम एक्चुअली चाहते हैं कि आई ऑलवेज यू नो वांटेड कि मेरे वी लुक टाइप आईब्रोज हो. तो जनरली मैं जब भी पार्लर जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि मुझे ना वी कट चाहिए, तो वो लोग बोलते नहीं ये तो यू कट है, आपका यू कट ही होगा. बट व्हेन आई मेकअप माई आईब्रोज तो मैं तो वी कट ही ट्राई करती हूँ. तो आई डोंट नो वेदर इट विल लुक वी कट और नॉट, बट या आई डू ट्राई बिकॉज आई लव दैट वी कट थिंग. Fourth one is what? Yes, obviously mascara. I have this colossal mascara. आप लोग को आईलाइनर लगाने हैं तो आप लोग आईलाइनर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. एंड अगर आप लोग काजल भी लगा सकते हैं तो काजल भी लगा सकते हैं. इट विल लुक एंड एनहांस योर लुक more. This is my kajal, and now I'll just quickly apply it. So that's it. मैंने apply कर चुकी हूँ. Now the final touch, which is your lips. Apply this one. So this is from Nykaa and it's matte lipstick. Shades, I really love it, so I apply. तो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं according to your needs. अगर आप चाहते हो कि nude, you can go with nude. If you go with more light shades, you can go with the light shades. That's it. Now we have come to the end. और आप देख पा रहे हैं, I'll come close to the camera. आप देख पा रहे हैं कि with this so minimal products, and the products are also budget friendly. So you can make this look and you can obviously look beautiful. That this video has helped you to create a minimal, no foundation, without foundation makeup, and with surprising makeup products. I hope that you have never seen this ever in any of the videos, makeup videos. So this is the first time which I discovered, and I thought to share it with you guys, and you can definitely try and you will get a lovely, beautiful like this. Thanks for watching, and please do subscribe my channel. Click on the bell notification, select all notifications so that you do not miss any videos from this channel. And bye, take care, see you on my next video. Bye all.